This panel is being moderated by our very own Ms. Archana Surana ji, founder and chairperson of Women Mentors Forum and director of Arch College Design and Business. And for the panelists, I would like to invite Ms. Stuti Jalan, founder of Crosshairs Communication, Ms. Pooja Mukul, director of Jaipur Foot Rehabilitation Center, Ms. Alpna Tiwari, founder of Nuskha Kitchen, Ms. Neeru Yadav, Hockey Wali Sarpanch, as lovely named. So as we mark the International Women's Day, year 2023, there has never been a more critical time to invest in people, especially in women and girls. Skills, knowledge and know-how, collectively called human capital, have become an enormous share of global wealth, bigger than produced capital such as factories or industry or natural resources. India has a great demographic dividend, and our human capital is going to transform the socio-economic landscape of our country and the world. But human capital wealth is not evenly distributed around the world, and its largest slice of wealth as countries develop. How are we then going to be looking at these developing countries, building their human capital and preparing for a technology-demanding future? Creative leadership is perhaps the answer. Technology is only a tool, but creativity is the essence. Today, the world needs creative leadership. Leadership that will break stereotypes, nurture new mindsets and heart sets. Women's leadership will bring significant contribution in this direction. Women on boards is a great opportunity, but their voices are little heard as the majority is from the other gender. Yes, step by step things are changing and lots have to be done in this direction. So the Women Mentoring Summit was an occasion that we created to bring stories and dialogues and conversations that would revolve around how women need to be rather than do. As Manira in the morning just pointed out, are we trying to be somebody or are we just trying to do more and more to be in this landscape? And when it is all about being, it requires a lot in terms of a heart set. While most of us have probably tried to deal with the challenges that are a part of the conditioned way of being for centuries in terms of a patriarchal society that we've had. But when it comes to creativity, the first and foremost thing would be breaking stereotypes. And I think we have such women here who are breaking stereotypes. We talk about oneness, and I believe a lot in oneness. I believe a lot in quantum consciousness. Where there is no gender, we are gender fluid, gender neutral. And when it comes to the journey of the soul, we are all one. But when we live in this world, we can't negate the fact that there are gender differences, there are physiological differences, there are intellectual differences. The way we think, the way they think, if they can be in harmony, they can be harmonious, it can make a more conducive society rather than conflicting behaviors. So here I have a panel. They're all being already introduced to all of you. And my question would be direct. Creative leadership, reaching heights. So if I look at what a beautiful Sarpanch who's done this work, आप खुद भी हॉकी खेलती हैं क्या? खेलना हम सबको नेचुरली आता है. और खेलने की जब बात करते हैं तो सिखाने की बात ठीक है, टेक्निक की बात बाद में आती है, पर ये हम स्वतः ही कर सकते हैं और इसमें लगन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो आपको क्या लगता है कि अगर आप इस तरह की लीडरशिप के थ्रू, खेल के द्वारा आप जो प्रोत्साहन दे रही हैं, उसमें जो महिला वर्सेस जो बॉयज़ है, आप किस तरीके से वो समन्वय बैठा पाती हैं? मैं खुद खेल नहीं पाई, तो मेरी ये इच्छा थी कि जब मैं सरपंच बनी तो मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जिस समाज के अंदर हम रह रहे हैं, सरपंच नाम को शुरू से ही एक ऐसे कहते हैं कि पुरुषों का उस पर अधिकार होता है
अगर आपकी महिला सीट आएगी तो ही आप उस महिला के नाम पर आप उसको खड़ा तो कर देते हो अपने परिवार के अंदर से चुन के कि ठीक है आपके नाम से हम करें, लेकिन जो सरपंचाई जो करते हैं वो परिवार के जो पुरुष हैं वही करते हैं। तो ये पद कहीं ना कहीं, क्योंकि समाज भी इसको स्वीकार नहीं कर पाता कि एक महिला का नेतृत्व होगा। गांव में जब पंचायतें होंगी, मोस्टली देखा गया है कि गांव में जिस प्रकार से पंचायतें होती है तो उसमें सब जेंट्स ही उसके अंदर होते हैं और वही जो फैसला लेते हैं। ज़्यादा तो लेडीज़ को बोलने ही नहीं दिया जाता उसके अंदर। अगर आप अपनी कोई शिकायत भी लेके गए हो और आप उस चीज़ के लिए विक्टिम हो, अगर कोई महिला, और उस बात पे भी पंचायत तो भी उसको आप उसको लिमिटेड ही बोलने देंगे कि बस इतना बोल दिया, उसके बाद स्टॉप। आप अपनी बात को खुलकर रख ही नहीं पाते हो। तो ये एक चीज़ मैंने जब मैं सरपंच बनी उस टाइम मैंने देखी, और मेरी पंचायत के अंदर भी कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर था कि इसको तो सिर्फ एक महिला है जी, सीट महिला की आई है तो इसे खड़ा कर दिया है, और उसके बाद जो सरपंचाई करेंगे वो तो जो घर के जो पुरुष हैं वही करेंगे। और इसका तो एक ये चीज़ मेरे सामने आई। दूसरा, जब मैं सरपंच बनी उस समय मेरी पंचायत के अंदर अब जो सिचुएशन है वो ये है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो खुलकर आगे आने लगी हैं। उनको ये लगता है कि हाँ हम अपनी, उनकी कोई समस्या कैसी भी किसी भी प्रकार की होती है तो वो बताती हैं और डायरेक्ट मुझसे मिलकर बताते हैं। तो एक उनको मोरल सपोर्ट इस चीज़ के अंदर मिलता है, क्योंकि आज से पहले जितनी भी सरपंच जो भी रहे या तो पुरुष रहे हैं, और कोई महिला अगर रही भी है तो उसको तो यही नहीं पता कि उसके साइन कहाँ हो रहे हैं या फिर उसको कोई मीटिंग्स कब होती हैं, कब क्या, किसी चीज़ का नहीं पता। ये एक बदलाव जो मैं जब सरपंच बनी तो मेरी पंचायत के अंदर मैंने किया। दूसरी एक हम अगर बात करें तो जैसे गांव के अंदर खेलने का, और लड़कियों को तो बहुत कम ही मतलब बाहर निकलने का, या जो बहुएं हैं, जैसे मैं मेरी पंचायत में जैसे मैं बहू, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि अभी 8-10 साल शादी को हुए हैं, अब ये थोड़ी हमें बताएगी, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी से जो चीज़ें चली आ रही हैं ना उनको तोड़ना, और फिर आप वो लोग सुनना ही नहीं चाहते। जो आज जिन्होंने 80 साल उस गाँव को दिए हैं, वो मेरी बात को कहीं ना कहीं ये उनके मेल ईगो को एक हर्ट कर देता है। तो वो सोचते नहीं कि कल की आई लड़की है वो क्या फैसला करेगी, एक अधिकार उनका पुरुषों का ही इस चीज़ के अंदर होता है। तो मेरा कहीं ना कहीं ये है कि जैसे गांव के ग्राउंड के ऊपर भी लड़के जो दोनों टाइम खेल लिए, शाम को भी खेल लिए, वहाँ पर पेरेंट्स अपनी लड़कियों को कहीं ना कहीं भेजने के लिए कतराते हैं। अब जब मैंने लड़कियों की वीमेंस हॉकी टीम जब पंचायत के अंदर मैंने बनाई तो उनके पेरेंट्स से मैंने बात की। एक बार का वाकया मुझे याद है कि हम लोग, क्योंकि उस समय हमारे पंचायत में ग्राउंड हॉकी का था नहीं, ग्रामीण ओलंपिक गेम बिल्कुल सर पर आ चुके थे, तो मैं उनको अपने से कम 8-10 किलोमीटर दूर बाहर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ग्राउंड था, मैं उनको दोनों टाइम बच्चियों को अपने साथ वहाँ ग्राउंड पे दोनों टाइम में लेके जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि 7 बज गए, लेट हो गया, हल्का सा अंधेरा हो गया पहुँचते पहुँचते, तो सभी के पेरेंट्स ने ये कह दिया उनको कि हम कल से अपनी बच्चियों को प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल नहीं भेजेंगे। मैंने सब पर्टिकुलर एक पेरेंट्स के घर जाके उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आज हमें देरी हो गई क्योंकि पास में है गेम, और कल से मैं टाइम का विशेष ध्यान रखूंगी, आप प्लीज़ बच्चियों की प्रैक्टिस बीच में मत छुड़वाइए, क्योंकि गेम के शायद 2 या 3 दिन ऐसे बचे थे। मैंने कहा इनको, इन्होंने इतने दिन से मेहनत की है और आप एकदम से एक दिन अगर हम लेट हो गए तो आपने उनको कन्वेंस ये करना पड़ा जाके मेरे को कि आप फिर ड्रेसेस के लिए कन्वेंस करना पड़ा कि वो बोले हम ऐसे ये स्निकर वगैरह हम पहनने नहीं देंगे और ऐसे अच्छा नहीं लगता है, हमें तो ये कहते हैं गांव में कि क्या कर लेंगी, ये जाती है खेलने के लिए कुछ। मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन इनको आप इनके अंदर एक खेल की भावना आएगी, प्लस में शरीर के लिए भी ये ठीक है, अच्छा है। और अगर इनमें से 1-2 बच्चियां अच्छा खेल जाती है और आगे निकल जाते हैं तो आप ये देखिए ना बाकी बच्चियों को कितना इससे सपोर्ट मिलेगा। तो आपका जो है कि जो रूढ़िवाद है, जो परंपरा चली आ रही थी उसको तोड़ने का जो पूरा प्रयत्न आप कर रहे हैं, हाँ। उसमें अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वापस आऊंगी कि क्या जो ये बाधाएं आपके रास्ते में आ रही है ये आती रहेंगी, तो आपकी रणनीति क्या है उसको लिए मैं वापस आपके पास आऊंगी। तो तब तक के लिए मैं अल्पना जी से बात करती हूँ। अल्पना जी का जहाँ बिजनेस इनोवेशन की बात करते हैं तो बिजनेस इनोवेशन में शार्क टैंक तक पहुँचना अपने आप में एक बात है, और शार्क टैंक में जा करके फंडिंग मिले ना मिले वो कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर जा कर के अपनी बात को रखना, उसके लिए तैयारी करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुशक्क़त है। तो अल्पना जी, जहाँ आप ये जो अपना पूरा जो प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद का जो पूरा काम है जिसमें आप हर तरह का शायद खाना बना रही हैं, और आपने मुझे कहा कि बहुत कंट्रीज़ में आपके क्लाइंट्स हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में आप डिलीवरी दे रही हैं, तो थोड़ा आप बताएं कि इस पूरे काम के अंदर में आप संचालन कैसे कर रही हैं इस पूरे काम का,
क्योंकि संचालन करना और देखिए एक स्ट्रैटेजी होना, ड्रीम होना, आइडिया होना बहुत आसान बात है। आसान तो नहीं कहूँगी, वो भी एक पहल है, लेकिन उस पहल में कितने लोग आगे बढ़ पाते हैं और उसको क्रियान्विति देना, साथ में उसको रूप देना, स्वरूप देना और उसे इस स्तर पे लेके जाना बहुत बड़ी बात है। तो अल्पना जी, आप अपने पूरी मुझे बताएं थोड़ा कि भाई, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बहुत क्रिएटिविटी चाहिए होता है, नई सोच चाहिए होती है, नई विचारधारा के साथ आगे चलना पड़ता है, तभी जाकर के आप वहाँ तक निकल पाएंगे। और आपका जो प्रोडक्ट है, इसे भी वापस वही है, हमारी मान्यता के साथ जुड़ा था, क्या जरूरत पड़ी है, घर में बनती है, क्या करोगी ऐसा बनाने के लिए, कौन तुम्हारा खरीदेगा, बाजार में इतनी चीज़ें आती है। सबने हमेशा ये बताने की कोशिश करी होगी कुछ नहीं है इसमें, तो है ना। तो आगे आप बताएं। क्योंकि ये सभी के साथ होता है कि जब शुरुआत करते हैं तो समस्याएं बहुत सारी आती है, और नो डाउट मेरे साथ भी आई, लेकिन मैंने मेरे जो काम की शुरुआत है वो 2006 में एज ए चैरिटी के हिसाब से शुरू किया था, जहाँ मोस्टली जयपुर के बहुत अच्छे डॉक्टर्स ने मेरा साथ दिया था। एंड मैं नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने इस नुस्खा की शुरुआत में मेरा सपोर्ट किया। डॉक्टर संतोष यादव दुर्लभ जी से हैं, उनकी बहू के लिए मैंने बनाया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ में इतना अच्छा हुनर है, उसको तुम क्यों नहीं करना चाहती हो। मैंने कहा ठीक है, मुझे वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फैमिली मतलब मेरे को इतना नहीं था कि मैं कोई बिजनेस करना चाहूँगी या इसको ऐसा कुछ मैं कहीं लेके जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार शुरुआत करो। शुरुआत करते करते मेरे से बहुत सारे डॉक्टर्स ने जब सुना तो वो मेरे साथ जुड़ते गए, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, वाकई में ये मार्केट ऐसा है जहाँ मुझे बहुत कुछ करना है। अड़ोस पड़ोस में भी मैंने देखा कि जो एक ज़रूरत होती है प्रेग्नेंट लेडी को, एंड उसके बाद डिलीवरी के बाद, वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा, क्योंकि मैं एक वैद्य फैमिली से थी और मुझे पता था कि हाँ हमारी लाइफ में क्या चाहिए, तो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहती हूँ। और इसी दरम्यान 2019 के आसपास मेरे बेटे ने, आप लोगों ने सबने देखा होगा शार्क टैंक पे, उसने कहा कि मैं अपनी जॉब स्विच करके दूसरी जॉब करना चाहता हूँ। मैंने कहा 1 मिनट आप इसमें रिसर्च करो और देखो कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मम्मी ये मार्केट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त वो बेंगलोर पोस्टेड था। उसने कहा कि मम्मी यहाँ तो बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं, तुम आ जाओ। और हमने वहीं से मेरी ये जर्नी की बेसिक जो प्रॉपर जो शुरुआत है वो वहीं से हुई, और बहुत अच्छा भी लगा। बाकी आप जो कह रहे हैं कि हाँ, जो कहते हैं कि ये फूड हम बना लेंगे, वो बना लेंगे, उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं था, दादी नानी से था। उन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल था। तो हमने उन्हें ये समझाया कि आप जो बनाते हो उसमें और हम में सिर्फ ये फ़र्क है कि उस वक्त आपका क्लाइमेट अलग था, आपकी दिनचर्या अलग थी, आपका रहन सहन अलग था, आपकी बॉडी अलग थी। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। आज बच्चों का ये मान लो कि दिन भर वो लैपटॉप पे बैठी होती है, उनको कौन सा काम करना होता है, और आप खेतों में जाके काम करते थे, तो उसमें चेंज है। तो आप उसको आयुर्वेद के हिसाब से इस तरह से बनाओ कि वो उनकी बॉडी एक्सेप्ट करे, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी ने चेंज किया, लेकिन हाँ, आज नो डाउट नानी दादियों को भी हमने बहुत चेंज कर लिया है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये क्रिएटिविटी वाली बात बहुत अच्छी सुनाई। आई थिंक मेरे को बहुत उम्दा पैनल मिल गया एकदम, और गजब बात बोली आप। थैंक यू। पूजा जी, you've been working with the rehabilitation of, with the Jaipur foot. Jaipur foot has a name which is internationally acclaimed. It was in the Design Impact Awards on the Forbes, right? On the Forbes cover magazine. I remember having, it also went to the World Design Organization. I remember going to Mr. D.R. Mehta Saab and taking Pradumna Vyas, the NID director there. And it went to that level, and then a lot of things happened accordingly. You get a lot of funding from all these places internationally. Having said that, you being into this space, I mean, doctors are all over the place. What are the kind of challenges you have witnessed in your space, and the kind of creative intervention that you have brought in, which has made a difference in that scenario? You are a US state alum as well, and I'm sure with your body of work where the president has honored you, we'd like to hear your story. So, having heard a lot of stories and moving and shaking and really devastating stories, I beg to say that I have not faced any discrimination as a woman. Being a woman has always been an advantage for me. And as far as challenges go, it's very hard for me to think of any challenge that I have encountered in life, because you see, during our days, if you were a good student and if you had science, the natural course that your life would take would be to become a doctor. If you are a doctor,
you would take a specialty which would be like medicine, gynae. That is where I deviated. So I went into orthopedics and rehabilitation. And what I feel, how I have made a space for myself in what we all call as a male-dominated environment wasn't male-dominated for me. I was the only woman always in a room full of people, because it was either engineers, all orthopedic surgeons are male, all technicians who are making prostheses are male, most mechanical engineers that I work with are male. I'm the only woman. And what I feel is, as women, we should not try to emulate men. I mean, there are traits of women that I wouldn't say superior or inferior, because we are all just, the two genders are different. We all have our, traits that are unique to us. And I never wanted to change and be like a man. I always worked in an environment where I promoted cooperation instead of competition. I didn't work on a carrot and stick model. I wanted to give people who work with me a purpose. And as far as patients are concerned, I work with people who have lost their limbs. So I put people back on their feet, not just physically, because when people lose a limb, it's not just a physical loss. They are devastated emotionally. In fact, it's kind of an end of life. You feel there's no life without limbs. I mean, we would all appreciate that, because, imagine if we can't walk, what life do we have? So I think the compassion that comes with being a woman is such a huge advantage in a world where you're surrounded by men who are just looking at technology, that, okay, this is a limb is lost, okay, we'll give this limb, that's the technology we're going to use. And here's a woman who's going to talk to you about not just your loss, but also, okay, who's there in your family? What do you want to do? What did you want to do before you lost the limb? And, motivating them and inspiring them to dream big. And I feel that being a woman has always been an advantage. And I'm glad that, I was minority, because most of the other people there were working on a very different model. So just being a woman is creative enough when it comes to leadership. And as a woman, I always feel also that, we are not supposed to bring out the best in people. And that's what leadership is about, to let people's potential come out, which is difficult for men to do, and it's easier for women to do. So I think just being a woman is, I see more advantages than discrimination against or, challenges that I face. I think it's great to be a woman in this. No, I think you're saying the great thing, because I personally never experienced. What I experienced is when you're young, when you're growing, everybody is patting you from back. They want you to grow. They want to see you doing well. But I've seen when you start getting bigger and bigger, that's when I have seen the insecurity around. I have experienced any kind of discrimination at this age when I was 50 and not before that. And that was very surprising. Even a conversation, because the moment you say that, you say a little loud about that discrimination, you are then put into a thing that you are using the woman agenda, which is not the case. If you were any human being, you would do that, right? So that's what I've seen when you actually step up somewhere. जब तक आप छोटे हो, हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है. So I'm glad what you're saying that. And being a woman itself is the creative bit, which it's, the whole idea of women being in a space is bringing a different viewpoint, a different aspect. I think that itself is one of the very element of creativity. So thank you so much, and I think that's a great viewpoint, and you being amongst all these men, and probably the softness that you bring in, maybe it has touched a lot of other men as well. So yeah, it has. So interesting. So when we look at the Women Mentors Forum, it's connects, share, and inspire. That's what we've done the whole day. And when I look at this beautiful woman here, who's made of this forum, Women Inspiring Network.
So always I knew her as a hardcore business person. I remember some couple of years back, somebody, a friend who's a fashion designer from Kolkata, Abhishek Datta, he told me, you're looking for a PR agency. Why don't you meet this lady? I went and met her. I was really intimidated. Let me tell you, she was so bossy. Oh, what? आप कौन हैं? आप क्या हैं? आप क्या करते हैं? आप कैसे करते हैं? आप कैसे? मैंने कहा यार ये तो घबरा दिया मेरे को तो इसने, हाँ? So that way, because she was very to the point, her business, what it meant. And then all of a sudden I say, she's built this network. So all of us have stories, why we are doing this, why Women Mentors Forum came into my life, how it happened. I had no plans for it. I did not think about it, that I need to do something, aisa kuch karungi. Kuch bhi nahi socha. It was just because of this global mentoring walk. We had 150 plus participants, and I just created a WhatsApp group. And after the WhatsApp groups, we started meeting at the space every 15 days, once a month. And it started nurturing. And my whole point was that, women own it up, and it grew very organically. So when I want to hear her story, why this Women Inspiring Network started, I'm sure she has a story too. So I'd like to hear that creative bit of your story. So there is a story. So of course, just when I started my communication business process, that was 23. I didn't think much about it. Our program, the Fortune program, of course, always imbibed in us how to pay it forward. In our own small ways, we were always doing things. I've been part of your mentoring walk, if you remember. Yeah. And I remember during the pandemic, a client of mine, he's a luxury client, and he says, and it was just like 4 days had happened, and it was late March, and he's saying, shall we do a webinar? But Stuti, I can't really pay you. And can you get me some speakers? Some people from the fashion industry and brands and retail, and, let's just kickstart it. So I said, okay, but I want to do a few sessions on women change makers, then I will not charge you a fee. So he says, done. So in a span of a week, we put together 14 panel discussions. So we had a total of 70 speakers. I ensured 35 to 40 were women speakers in different industries. But I had a lot of fun doing that. And we had 2 sessions on women change maker. And so we just created the page on Women Inspiring Network, and we kept putting the data there. And I was like, I'm so inspired. And I remember this was, I think, 3rd or 4th of April when India was still in a lockdown. So whoever I would pick up my phone, they would say, of course, Stuti, we are available. We can't step out. I mean, you tell us whatever time you need us to be online, and we'll be there. And then we did a series which was 100 positive voices of women during lockdown. So, I wanted to just spread positivity. Everybody was saying, this is not happening, that's not happening. So no one wants to keep hearing grim news, I mean, I think we weren't even certain what the pandemic was. And so over a period of 2 years, we did a lot of panel discussions, which I mentioned earlier, with educational institutes and brands. So what I hear is that COVID has accelerated a lot of creativity within people, right? While they were at home. Yeah. Yes, and it was an opportunity for the network at that point. So somewhere again, that stereotype of going to work daily, 9 to 6, somewhere, that stereotype, that conditioned behavior got a jerk. And I think that has been really instrumental in having a lot of people find their real passion within when they really found the time. And I also, the message which I want to sort of leave, like there's always an opportunity. It's the way you see a problem or an issue at a given point of time. So if you think about it positively, so I was able to use my communication, my cross-sales team into the network, because all the clients had stopped work or no one knew. It was as if the world was falling apart. But they all used their creativity and to the maximum usage, and we were doing things. And, our most recent being the one which we did day before, and we've done 3 or 4 offline events now, which have been a huge success. So I just feel it's my happy space. It's my own personal inspiration, motivation.
and I get energy while I speak to the others out there. Okay, consider I give you a scenario, right? This was innings 1, है ना? अब ये second innings खेलने वाले हैं हम, ठीक है? So अगर ये हम second innings खेलने वाले हैं, तो हम वहाँ से वापस शुरू, अच्छा चलो अगर हम, I'll come back to you स्तुति, हाँ? So we can go back to सरपंच मैम. अगर हम ये second innings देख रहे हैं, तो आपने एक स्टेज का काम कर लिया, एंड आप उसी तरीके से करते रहोगे तो फिर धीमे धीमे रिजल्ट्स आने बंद हो जाते हैं. तो अगर ये सेकंड इनिंग्स आपको उठानी है तो कैसे आप गेम को ट्रांसफॉर्म करोगे? एक सिनेरियो बनाते हैं अपन, क्योंकि क्रिएटिविटी में क्या होता है, बहुत कुछ फ्यूचर ड्रिवन होता है. हाँ, स्पेशली हम जब डिजाइन में देखते हैं, हम प्रेजेंट को तो देखते ही हैं, लेकिन अगर आपको फ्यूचर के लिए कुछ डिजाइन करना है तो फ्यूचर अननोन है, एक अननोन रेल्म है. उसके लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को एक नया दायरा देना पड़ेगा. तो अगर मैं आज आपसे कहूं कि एक अभी के लिए अगर आप सोचें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं लोग, वो आम तरीके से सुना जाता है, तो क्या आपके दिमाग में आता है, क्या ऐसा करना चाहोगे जिसमें आपके दिल की वो सारे अरमान पूरे हो जाए उस सेकेंड इनिंग्स में, एकदम दमदार जीत रहे? जैसे मैंने पहले लड़कियों की हॉकी की टीम बनाई अपनी पंचायत के अंदर, तो अभी पहले ग्राउंड था नहीं हमारे. अभी मेरा ये है कि अब मैंने अपनी पंचायत के अंदर खुद का हॉकी का ग्राउंड अपने पर्सनल खर्चे से मैंने बनाया बच्चियों के लिए, और उनके लिए एक प्राइवेट कोच रखा है, तो उनको प्रैक्टिस करवाई उस चीज़ के लिए. दूसरा मेरा जो है ये है कि मैं अपनी पंचायत की जो क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं उनका सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं है, वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है. तो मेरा ये है कि मैं अपनी पंचायत की महिलाओं को आत्मनिर्भर अगर वो बना सकूं, मैं उनको कुछ ऐसे रोजगार या कुछ भी छोटे उनके अंदर जो क्रिएटिविटी जी है मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक वो कहूँगी, अगर आप बना सकूं वाली स्थिति में नहीं करना है आपने को, ये बन गया है, हाँ 5 साल बाद ये हो गया है, अगर वो आपको एक सिनेरियो अपनी आंखों के सामने अभी क्रिएट करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस सेशन से आप बाहर निकलें तो आपके पास में एक नई रूपरेखा हो जिसमें कलात्मक आपकी क्षमता का पूरा अभ्यास दिखे. तो बिना हिचक के कि ये परिस्थिति होगी कि नहीं होगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा, छोड़ दें आप उसको, और वो नई कल्पना का आप अभी सृजन करें. तो क्या होगी वो नई कल्पना? मेरी कल्पना ये है कि मैं अपनी पंचायत की सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बने, वो उनके लिए कुछ ऐसे रोजगार अपनी पंचायत के अंदर मिला, उनके अंदर जो क्रिएटिविटीज़ है उनको वो क्रिएटिविटीज़ जो है वो बाहर निकले. जैसे कुछ महिलाओं के अंदर कुछ जो सिलाई कढ़ाई के अंदर, कुछ कुकिंग के अंदर, कुछ भी उनके अंदर जो भी है वो बाहर निकल के आए, और एक ऐसा माहौल मेरी पंचायत के अंदर बने कि हर महिला के पास अपना खुद का कुछ ना कुछ करने के लिए हो, वो अपने पति के ऊपर या अपने ससुर के ऊपर या किसी के ऊपर भी डिपेंड ना रहे. एक पंचायत का मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरी पंचायत जो हो बिल्कुल कचरा मुक्त हो जाए, कचरा मुक्त हो जाए. उसके लिए मैंने अभी एक मुहिम चलाई है जिसमें मैंने अपनी पंचायत के अंदर एक बर्तन बैंक खोला है. कोई भी शादी या कुछ भी होता है, कोई भी समारोह होता है, तो उसमें हम जो ये डिस्पोजल की ग्लासेस वगैरह प्लेट्स जो है उसको यूज ना करके हम स्टील के बर्तन उसमें यूज करें. अभी 2 शादियां हुई, उसमें मैंने बात की और उन लोगों ने वो लेके आ गए थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसको यूज नहीं किया, और स्टील के बर्तन जो है वो बर्तन बैंक से लेके और वो यूज किए. एक मेरा ये है थीम कि गांव में जितने भी जो कचरा है कहीं पर भी डाल देते हैं, तो उसको कचरा मुक्त और कीचड़ मुक्त मैं मेरी पंचायत को करना चाहती हूँ. ये मैं अपने उसके अंदर देखती हूँ कि वो चीज. बहुत बढ़िया, बहुत कलात्मक बात बोली आपने. कचरा मुक्त आपका प्रदेश हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको. अल्पना जी, आपके लिए भी यही सिनेरियो है, हम चारों के लिए. हाँ, मैं भी अपने लिए आज बनाना चाहूँगी एक, क्योंकि क्या है, नहीं तो वही जिंदगी चलती रहती है और नई कल्पना के लिए वो समय नहीं रखते. आज इस मंच का हम इस्तेमाल करेंगे उस नई कल्पना के सृजन के लिए. 5 साल बाद अगर हम ये कहें कि आप ये क्या जो हो गया है, मान लीजिए आज हो गया है वो 5 साल बाद, वो उस फ्यूचर को आप अभी लाके खड़ा कर दीजिए. बिल्कुल 5 साल बाद, जैसा मैंने अपने स्पीच में भी बोला था जो आपके पास भेजी थी, कि 5 साल बाद मैं अपनी नुस्खा किचन को एक वो मुकाम देना चाहती हूँ जहाँ अगर किसी प्रेग्नेंट बच्ची का, मतलब प्रेगनेंटी शब्द भी आए प्रेगनेंसी का, वहाँ पे उनके साथ नुस्खा का नाम हो और ऑल वर्ल्ड में हो, क्योंकि ये नीड ऐसी है. मुझसे वहाँ भी शार्क टैंक में भी पूछा गया था
कि यो क्यों करना, कि इस बिजनेस को आप कैसे आगे तक देखना चाहती हो। तो मैंने कहा जब तक सृष्टि है तब तक बच्चे पैदा होंगे। आज गायनेकोलॉजिस्ट है कि नहीं, हम जब बच्चा पैदा कराने वाली है तो खिलाने वाले भी तो होने चाहिए ना। आप ये चीज नहीं सोच सकते हो कि इनफर्टिलिटी के जयपुर में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, हाँ। ठीक है, क्या आपका एक लड्डू या ऐसा चीज खा करके वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाए उन सारी औरतों की? ऐसा कुछ नुस्खा सोचो ना। नहीं, थोड़ा बहुत तो हमारा क्योंकि काम दे जिनके रहा है। बच्चे नहीं है, बड़ी पीड़ा है उनको। नहीं, वो पीड़ा है, और हाँ। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमारा तो पूरा पैनल में आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर वैद्य हैं वो मेरे पैनल में है, और वो कुछ कुछ कर भी रहे हैं ऐसा कुछ इसके ऊपर। एक मैंने जैसे अपनी नारी कल्याण पाक के नाम से एक मेरा प्रोडक्ट निकाला है, जिसमें बच्चियों को पीसीओडी और इस प्रॉब्लम से निजात दिलाई है। और आगे जाके उन बच्चों के, मतलब एक बच्ची ऐसी थी जिसकी तो मैं घटना बताऊं कि उसके 2 बार मिसकैरेज हुआ। तीसरी बार उसको हमने कहा कि ये प्रोडक्ट लेके देखो, क्योंकि कोई टॉर्च हो सकता है या कोई और भी आपके रूबेला कुछ हो सकता है। वो बच्ची आज 1 साल की बिटिया को अपनी गोद में खिला रही है। क्या बात। तो हम ये चाहते हैं कि किसी को भी कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत बढ़िया, क्योंकि धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि हर नारी को नारायणी बनाए, ऐसे नहीं है, क्योंकि माँ बन के ही सारी चीजें उपलब्ध होती है हमारे को। So what I imagine as far as my line of work goes is, I work for people with disabilities and I work for the underprivileged. So nearly 80% of people with disabilities are very poor. And if you have disability, you see poverty and disability are inextricably linked. If you are poor, you're more likely to be disabled, and once you're disabled, you're going to be more poor. So what I imagine right now, everything that's happening in India for people with disabilities is based on patronage, compassion. You know, these people, like even the Prime Minister, you know, started calling Viklang, ko Divyang bolne lag gaye hain. And everything is charitable. Everything is given to them free because they are, you know, disadvantaged. What I imagine is that charity should become unnecessary. Because charity never really empowers anybody. Right now, what we are giving and what we are doing, and the country as such, the mindset that we are moving with is that of entitlement. People feel, I'm disabled, I should get a pension, I should get a free railway pass, I should get disability certificates that gives me, you know, reservation for jobs and all. I feel that mindset, I hope that mindset of people with disabilities changes, and we put people back not just on their feet physically, but also economically and socially, so that they are included and they are productive members of society. Because no matter how rich a country, you can't take along 5 or 6% of your population that's unproductive. And charity, I don't think is a good word. You may feel very good, you may think that giving forward and you know, helping people who are poor is great. But what charity does is ensures that the rich feel rich and the poor feel poor. And you are rich only because there are poor. The moment there are no poor, you're not going to be rich and you're not going to feel good about yourself. So you have to give that up. Very and profound. just lift people up to your level instead of, you know, making sure that you give charity and you keep them where they are. Very So I profound. feel that charity, I mean, let there be a world where charity is not needed and everybody can, you know, live a life with dignity. I mean, I've often thought about it, but on women leadership, and of course, I would seek all our support of our group here to at least have an impact in the next 5 years of at least 10 million people, and we should be the women who should be representing women at, let's say, a World Economic Forum. Wow. So when I look at it, I'm going to take this opportunity. I see design as a very powerful way to live in the most creative way in terms of expressing ourselves. And I feel that India lacks design in a very big way, design thinking in a very big way. We talk about empathy. You know, when we talk about performance, people, they don't have, India perhaps I feel lacks that understanding of performance and excellence and design somewhere. In our tradition, we had this at a very deeper level. But today, it's all about just, you know, बस दिखावा ज़्यादा दिख रहा है मुझे. And you know, that inner, deeper understanding of how design can make a difference in our ways that we think our creative expression will change, how it can change communities, how we can solve the wicked problems through this kind of learning.
And I think design needs to be sown in every aspect of our life. And that's where creative expression will bloom. And when I look at the Women Mentors Forum, this is a place where I've seen there's been a phenomenal difference in the city itself. I've seen the way women are now interacting. There has been a dramatic change. So I hope to see this, where each woman can see a future for the people around them. It's not only about the self. Today it's all about मैं मेरा पैसा कमा लूँ, मेरा business चल जाए, मेरा काम हो जाए. वो अंडरस्टैंडिंग अभी ज़्यादा चल रही है, जबकि हम ज़्यादा जो होता है ना इंक्लूसिव होने वाली जो बात है, जहाँ पर हम समग्र विकास की बात कर रहे हैं, वो समग्र विकास की बात है जो मेरा दिल चाहता है कि हर जना उसके लिए उसका दिल खुला रहे और वो हार्ट सेट के अंदर में वो चीज़ आए. So that's what I am aiming at, and I see 5 years down the line, it's going to happen. Yeah. So thank you so much. Thank you for being on the panel, taking out time and being with us. Thank you for having us.